विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, एक पल नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं और विघ्नों का गहन गहते हैं। सज्जनों, ये जो बात कर रहा हूँ हम सब के लिए गौरवशाली नारी इतिहास की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे तो आपको ऐसी कई नारी शक्तियाँ मिल जाएगी जिन्होंने अपने जज्बे से बड़े बड़े महारथियों को लोहे के चने चबवा दिए थे। दोस्तों, इस नारी की गाथा को हम अपने मन में एक इंस्पिरेशन से तौर से लें और करें जोरदार तालियों के साथ अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस वुमन एम्पावरमेंट। સર ને બીજી વસ્તુ સર, આવી જ એક એક્ઝામ્પલ આપણા કૌશલ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પણ છે સર. શું વાત છે? હા સર, કાવ્ય દેસાઈ નામની છોકરી સર આપણા કૌશલ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભણે છે. તેણે પણ નેશનલ લેવલ પર સ્કેટિંગ પર જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ બતાવ્યું છે. સુપર! જોરદાર તાલિયા આપણી કાવ્ય દેસાઈ કાવ્ય માટે. સર मैं તમને જ રિક્વેસ્ટ करा सर, એમને એવોર્ડ વધાવો सर प्लीज. ओह, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये. यस सर. दोस्तों, हमारे लिए बड़े फख्र और गर्व की बात है कि ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स कौशल कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी है. जोरदार तालियां हमारे इंस्टीट्यूट के लिए और उनके हर जज्बे से भरे स्टूडेंट्स के लिए. और अब तालियों से स्वागत करें हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस का. आरसीबी टीम के तमाम फैंस जो है काफी निराशा में है. हम सभी को पता है टीम लगातार मुकाबले हार रही है. हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे. तुम और मैं अगर हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस हम जीतेंगे. तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में
એના માટે થોડીક વાત કરવાની છે. ખાલી આઈડિયા હતી કે આવું થયેલું છે અને આ કોરિયોગ્રાફી સેટ કરવી એના માટે ટ્વિંકલ મેડમ, સાગર સર અને સુરજ સરને થેન્ક યુ કહું કે આખો કોન્સેપ્ટ એમણે કોરિયોગ્રાફીમાં સેટ કરી આપ્યો. કારણ કે આરસીબીમાં વિરાટ કોહલી ભલે વર્લ્ડ ક્લાસ બેટ્સમેન છે પણ હજુ એ જીતો નહીં હતો. હજુ બી આ વર્ષે બી એની દશા ખરાબ છે. અને એ જ રીતે વુમન્સની આરસીબી ટીમે જીતાડ્યું. એ જ મારી ખાલી આઈડિયા હતી ને આ લોકો ટ્વિંકલ મેડમ, સાગર સર અને સુરજ સર જાંબી છે, દેખાતા નથી અત્યારે, પણ દે હેવ ડન ઇટ રિયલી વેલ. ખરેખર બહુ સરસ લાગ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ સાગર સર.